mobile ले आती so that it doesn't ring in the middle of stuff. Cool. Yeah. Okay. Hi, everyone. We're just waiting a little bit until people start joining in. So how are And you doing otherwise, Nupur? How are things? I'm good. I know, Veena, you're joining us. You're not based in India, and it does look like it's cold where you are. It's here in Pune. It's become pretty warm now. I think Yeah. so. Yeah, not looking forward to the summer. Does it mess up with your sugar? Because the temperature kills me. Yeah, actually, I mean, in the summer, I think blood sugar wise, it goes all over the place for me. And if it's very hot, then I start spiking, and uh, there's a lot of mess that happens with the sugars. I'm not as used to the very cold weather. I think you would be now very used to like what for us here in Maharashtra would be extremely cold weather. In other Yeah. parts of the world, it would be probably just normal. Yeah, But that's have true. you found winter to have a huge impact on your sugars? It does. So as soon as when I come back from India, let's say Yeah. India mein you have something around 22-ish, and when I come here, uh, when I came here in January, it was around -2 or something, and my sugars Oh my God. tanked. I was in 70s for days, for Oh my days. God. So it took me a week just to regulate. And then Yeah. suddenly, because here the temperature also changed, now it's going to be spring. So now Okay. in double digits, so like 10 or 11 or something. So it started Yeah. spiking just like it would in India. Yeah. Yeah. So it takes a couple of weeks to sit well with it. But that's crazy, right? Like from Yeah, -2 to 10. So then 10 is like relatively hot. I it's mean, hot. It's hot. You don't use heaters, the windows are open. wow. It's humid. So yeah. That's how quickly we get used to I mean human beings get used to adapt, like they get adapted to Yeah. different climates and different but when you were here in India, were you that type of person that, like, because some people always say that it's too cold, I can't like Mhm. switch off the AC, switch off the fan. So was that you, or were you like cool with no? No, Okay. I want the fan at 3. I'll take Ah. all the blankets that I have, but I still want the fan on. I want the AC on. I want everything to be going on. Yeah, yeah. I was Yeah. reminded of this because one of our friends, she's a T1 as well, and Yeah. while she was in India, she used to feel cold all the time. Like Uh, just in Pune, she was based in Pune, and then she shifted to the US, to a colder part, to a colder state, and mhm. um, I can't imagine how she must be managing. But all right, we seem to have forgotten. I mean, I seem to have forgotten that we are in a workshop. So, hi everyone. Uh, Hey. uh, and I'm here today with Veena, who's also a T1, and we're going to talk about. Well, you guys know what we're talking about. We're talking about balancing wellness and work and relationships and um, everything, along with your diabetes, which is a big challenge. It's not easy. So feel free to share this video with people that you think might benefit and might have something to gain. And we don't claim to have all the answers. We don't know everything, but I think it's good to acknowledge that there is a problem sometimes, and all of us face those issues, and they might be similar for many of us. So you're not alone. You're not suffering. It's just we're all in this together in some way, even though we're doing our own thing.
So that's that. And you guys also know about the Blue Circle workshops, which are workshops that are held online. And we do these workshops every Sunday at 5 p.m. India time. So that is also something that we do. We've been doing this for a couple of years now, and yeah, so I think it's been ever since COVID started. Actually, that was sometime in March or April of Yeah, 2020. That's when we decided to sort of go live with the workshops, because earlier we would have opportunities to meet people in person, but with COVID, a lot of things changed, and it became much harder to meet. So Veena, you're a neuropsychologist, and ever since you told me, I was like, wow, like this sounds like really awesome. I have no idea what it is, but I wanted to ask you, for the benefit of for me as well as all our friends here, if you could tell us what a neuropsychologist does, and also a little bit about yourself. for sure. So, hi, my name is Veena, as you already read about. I am doing my PhD in neuropsychology. I've done my master's in neuropsychology. Well, neuropsychology seems like a very fancy term, but it's not. It's just really talking about the relationship between your brain and behavior, how your brain structures sort of influence your daily activities. For example, your memory, your concentration, attention, your vision, language, and stuff. You see most neuropsychologists practicing in action in the field of rehabilitation. For example, if somebody has met with an accident and they need to be rehabilitated back into their daily lives, especially after a very heavy brain injury where they may have lost the control over their speaking or concentrating or sort of memory issues. So we try to rehabilitate such people by implementing a small activities, research based practices. There's a lot of work going on in dementia, Parkinson's, and so on and on. I am a researcher. I research with deaf people in India and in Belgium. So my sort of field is into looking at vision and language impairments, literacy, and so on. And I'm a type 1 diabetic. That's my identity at this point. But yeah, Wow, that's that's really interesting, Veena. It's amazing. And I think also, we have a mix of people that usually tune in. I can see a couple of our friends. Lucy's here. Hi, Lucy. Hi, Usha. And Ravinder Sas is here. And it's a mix of, diabetics. Some are type 1, some are type 2. Some are parents of children who have type 1. So, mixed bag there. But I think this, I do want to tell the caregivers that have tuned in that any of your family members that live with diabetes, be it type 1, and a lot of people are often worried about children with type 1. क्या होगा फ्यूचर में, क्या मेरे बच्चे successful होंगे, will they have a good career? I mean, right. look at Veena, look at all of the amazing people that come on our workshops, and be rest assured that you can have an absolutely normal life, a happy life, and pick a career and pick a calling that suits Yeah, you and that you want to be in. yeah. So, There's no stopping you as such. There is, as long as you have the support, as long as you have people around you who understand you, and as long as you believe in yourself. That's the major part, that you need to accept that it is a part of yourself, and you will figure it out on the way. It's going to be there. It's not going anywhere. So yeah, it's okay. yes. All right. So I see that there are a couple of people that have joined us now, and I think we are happy to jump into the sort of discussion. And Veena and I have sort of gotten a bunch of points ready for Yeah. today's workshop, and we're happy to explore these with all of you. And as usual, keep sharing your thoughts in the comments. Tell us your experiences. Ask your questions. Whatever you'd like to share.
Veena, maybe we can begin with the professional side of things, and then in the second half, move on to the personal part of balancing relationships and diabetes. But would you want to start with, like, how has your professional life impacted your diabetes and vice versa? Yeah, yeah. I'll just take from the point that I asked you, remember that do you forget you're diabetic? So for me, Yeah. that this has happened. When I'm too much into my work, I am too much thinking about, okay, I need these things to be done today. I have so and so deadlines. Din ka chal raha hai, everything is going on, and I need to travel. I sort of forget that I am diabetic. I forget my insulin supplies. I have forgotten my timer, that okay, I need to change my sensor, and I'm in the train, but I've forgotten to get another sensor with me. Yeah. So things like that. Then let's say you have an important meeting, and that keeps on stressing you out all the time. You're like, okay, I need to show up for the meeting. I have to start prepping for it, but I cannot deal with diabetes at the moment. I need to keep it on the back end. Yeah. What do I do? I cannot focus on such things. This is something that I have had for a couple of years, and balancing the professional commitments and balancing diabetes, because a major part of diabetes is not under your control, other than the food part and a lot of other things. It's a struggle. Correct. So firstly, we need to acknowledge that it's a struggle. Pushing ourselves just to look at the bright side, that okay, I did it today, maybe I'll be able to do it tomorrow, good. But when things don't work out, pushing yourself down, ki nahi, I was not able to meet my deadline, and I was also a poor diabetic today. I did not even focus on my sugars. Okay, I'm just such a bad person to not be doing good in any sort of area. Well, it's just a day. You need to be at such times very kind and patience. You need to have a lot of patience with yourself. On a long run, what I found is, on an average, I will have days where I am bad in all sort of aspects: diabetes, profession, personal, you name it, and I'm going to be bad in that. Such days are really less, if you take accountability for it. Like, okay, ठीक है, हो रहा है, हो जाएगा. I can do it. I need to be kind to myself. Such things has sort of helped me with my professional life. Second thing, the people that I work with. So a lot of my colleagues are well aware that there are going to be times where I would not be okay, where I would not be mentally present there, because I would be too busy fixing up my hypo, and then I also have a meeting going on and so on. Uh, but a pre-information, like keeping this transparency even at your workplace, helps. That okay, there are going to be times that I'm going to slump, and you should at those times rather look at the wins than the slumps that I come up with. And that it's very important that you also tell your colleagues or your people around you, with you work with, especially, that there are going to be times where you would not be yourself because of the hypo. There are going to be times that you take a lot on your plate. You're chasing those deadlines and end of the day stuff, but you can say no to those things, and that you want to ask for help from colleagues, and that they're not supposed to talk you down or be very mean to you in a way. So these are some things that have helped me get into the zone of my professional life, like starting with transparency, and being very acceptance, having this sort of acceptance about stuff, and
because once you start accepting, it's very easier for others to accept you as you are, you know. Okay. If you have these insecurities, these denials about diabetes, especially in a professional circle, it's very difficult when you're dealing with so many people, and your experience are very unique, they will never understand, and you don't have to even convince them. It's just as long as you are good on your profession front, and showing up to things that matter, I think that's enough, you know. Yeah, so this is how the professional thing has been going on with me. Yeah. That's really insightful, and I do see a request for us to speak in Hindi also. So For we'll sure. try and mix it up. थोड़ा सा इंग्लिश में जरूर। बात करेंगे, थोड़ा सा हिंदी में बात करेंगे, ताकि सब लोग समझ पाए, पक्का। and everyone can sort of share their thoughts as well. तो अभी प्रोफेशनल लाइफ या वर्किंग लाइफ और डायबिटीज़ को कैसे बैलेंस किया जाए, उसके बारे में बातें चल रही हैं। और अगर आप कुछ कमेंट्स में शेयर करना चाहेंगे कि आप अगर जॉब करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब ही कर रहे हो। अगर आप if you're working a job or doing a business or you are managing a house, you still work, right? So that counts. So I'll quickly say that in Hindi also. चाहे आप अगर जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या घर संभाल रहे हो, हाउस वाइफ हो या स्टूडेंट हो, तब भी ये काम ही माना जाता है। तो काम और डायबिटीज़ को कैसे बैलेंस किया जाए, और कैसे ऐसे ना हो कि काम टेक्स ओवर और डायबिटीज़ आपका पूरा पीछे रह गया, या सिर्फ डायबिटीज़ ही बार बार फोर फ्रंट पे है और काम पीछे इग्नोर होता जा रहा है। तो दोनों में वो बैलेंस कैसे बनाए रखें, अभी फिलहाल इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सो अगर मैं इसमें और कुछ बताना चाहूंगी, तो आप ये भी जान सकते हो कि जैसे हमें हमेशा पता होना चाहिए कि डायबिटीज में कौन से चीजें आपके कंट्रोल में है और कौन सी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, ताकि ये जो ब्लेम गेम चलता रहता है ना हमारा, कि नहीं ये तो मेरे वजह से ही हो रहा है, ये मेरी शुगर तो मेरी ही गलती है। भले ही आप आपका रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप सो रहे हो वक्त पे, आप पानी पी रहे हो उतना, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, फिर भी वो ऊपर नीचे जा ही रहा है, आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो एट सच टाइम्स आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें जैसे टेम्परेचर हो गया, अब जैसे हम अभी बात करते क्लाइमेट हो गया, कुछ चीज़ें जैसे फिजियोलॉजिकल होते हैं, जैसे औरतों के लिए उनकी हार्मोन साइकिल होती है, जैसे स्ट्रेस हो जाता है जॉब के लिए या फिर घर के कामों के लिए, कोई भी चीज़, इन सब चीज़ों पे आपका कोई काबू नहीं है। सो अगर आप अगर आप ये जो ब्लेम गेम करते रहोगे ना कि नहीं मेरी गलती है, अक्सर आपका फोकस हट जाएगा, और आपका फोकस ना फिर बस ये हो जाएगा कि मैं एक बैड बहुत ही बुरा डायबिटिक हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ये आपको ना बहुत नीचे ले आएगा। सेकेंड थिंग, प्रोफेशनल लाइफ में भी ये उसी तरह आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे प्रोफेशनल लाइफ में आपके आपके काबू में क्या है, आप आपका परफॉर्मेंस, आप कैसे शो अप करते हो उधर पे, आप कितनी चीजें एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आप इस पे कंट्रोल कर सकते हो। आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते हो कि सामने वाले ने क्या गलती कर दी, उसकी वजह से आपको अभी उस गलती के लिए भर चुक करने पड़ रहा है। या फिर आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते हो कि अच्छा मेरे बॉस का तो मूड खराब है इसलिए उसने मुझे बहुत सारा काम दिया, नहीं। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, आप ना बोल सकते हो चीज़ों को ऐसे टाइम पे। आप ये देख सकते हो कि ठीक है, मैं शायद अपने थाली पे बहुत सारी चीज़ें लेकर बैठा हूँ, अब मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो होती है ना चीज़ें कि मुझे पता है मेरी लिमिटेशंस कहाँ हैं, ये जो सेल्फ अवेयरनेस होती है सॉर्ट ऑफ, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी प्रोफेशनल प्लस डायबिटिक वाले सर्कल में। सो बैलेंस आना इसमें ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। मैं नहीं कहूँगी कि हमेशा 50-50 होगा, कभी नहीं होने वाला। हमेशा ऐसा होगा ही कि 70% शायद आपका काम इम्पोर्टेंट होगा उस दिन के लिए, 30% आपका डायबिटीज होगा। बट अगर आप इन चीजों को कंट्रोल में रखोगे, जैसे इस दिन पे समझो आज 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 मंडे है, आपको पता है कि आज का बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल डे होने वाला है। इट्स कि डेडलाइन पे डेडलाइन, मीटिंग पे मीटिंग मीटिंग, ये वो आपको पता है, ठीक है।
अब आप क्या कर सकते हो ऐसे टाइम पे? आपके पास 70% तो आपका प्रेशर है, अभी आपको 70% दिमाग इसी में ही डालना है, 30% आपके पास बच रहा डायबिटीज के लिए। इन दिनों पे आप क्या करोगे? इन दिनों पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे खाने के साथ, आप आपके रूटीन पे जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव जो आप करने वाले हो वो इंपॉर्टेंट है, फिर वो चाहे ऑफिस हो या घर का काम हो, कोई भी हो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप जैसे फॉर एग्जांपल मंडे कोई गेस्ट आने वाले हैं और आपके ऊपर अभी सिर पे बहुत सारा काम आ चुका है, मुझे घर का भी करना है, मुझे गेस्ट का भी करना है, थक चुके हो आप। अगेन, गोइंग टू द बेसिक्स, आप बेसिक्स पे जाओगे डायबिटीज के लिए कि मैं, अगर मैं जानती हूँ कि मैं हर रोज 2 अंडे और एक सैंडविच खा के मुझे पता है मेरी शुगर नॉर्मल आने वाली, तो मैं मंडे को सवेरे बैठ के पराठे नहीं खाने वाली हूँ। बिकॉज एक्सपेरिमेंटिंग एट डेज जहां पे आपको पता है आपके डेज बहुत हैवी होने वाले हैं, आप यू गोइंग टू गेट टायर्ड, क्योंकि इवेंचुअली आपका डायबिटीज आपके काम को अफेक्ट करने ही वाला है, क्योंकि आपकी आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट होने वाली है। इसकी वजह से आपका चिड़चिड़ापन होना, या फिर शायद शायद लूज मोशंस लग गए, या फिर आपको हाई डायबिटीज की वजह से आपको बार बार पानी पीना पड़ रहा है, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, मीटिंग्स चल रहे हैं आप देख नहीं पा रहे हो, गेस्ट आ रहे हैं गेस्ट पे आप देख नहीं पा रहे हो। तो इन दिनों पे ऐसे सच, मतलब ऐसे सब दिनों पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक स्ट्रिक्ट रूटीन पे रहो। अब ये तो नहीं होगा कि हर सारे दिन एक साथ होने वाले हैं, है ना, सारे दिन एक साथ के तो कभी नहीं होने वाले। सो ये जो बैलेंस है कि कहाँ पर मैं आज 70% दूंगी, कहाँ पर मैं आज 30% दूंगी, कहाँ पे 60 दूंगी, कहाँ पे 40, क्योंकि 50-50 तो होने से रहा। तो ये जो है 10% का जो आपके पास, 10-20% का जो आ जाता है वो आपका कॉल है, और ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। Yeah. जैसे एक एक एग्जांपल देती हूँ कि अब मुझे पता है कि मेरे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बहुत टफ होने वाले हैं, और मुझे घर का काम भी करना है, मुझे ऑफिस भी जाना है, ये सब करना है। तो मुझे पता है कि अगर मैं जिम जो है, अगर मैं वो सवेरे ही जिम जाकर आऊं, मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली 1 घंटे की, बस भले ही मुझे उठने में बहुत कष्ट हो रहा हो, भले ही बहुत चिड़चिड़ा रहा हो, पर मुझे पता है कि अगर मैंने वो एक एक घंटा सवेरे का काम कर लिया ना, तो मुझे दिनचर्या में कहीं पे मेरी रुकावट नहीं आने वाली। अगर आई भी तो वो इतनी रुकावट नहीं होगी कि मेरा मेरा जो काम है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगा, कहीं ना कहीं रुक जाएगा, उतनी तो नहीं। सो वो एक चीज हो गया। फिर जैसे मुझे पता है कि मेरा सवेरे का जो वक्त है वो बहुत एक्टिव पीरियड है। सो मैं उसी टाइम पे ना तुरंत उठ के जल्दी जाके जिम करके आती हूँ, एंड देन आई एम लाइक चलो बताओ अब दिन में क्या करना है, कौन से घर के काम करने हैं, कौन से मीटिंग करने हैं। सो यू नीड टू फाइंड कि आपका एक्टिव पीरियड कब है इन सब टाइम पे, एंड देन स्ट्राइक अ बैलेंस कि 70-30 या 60-40। सेकेंड थिंग, ये ये एक और चीज इसमें इम्पोर्टेंट है कि हाउ डू यू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल। आप लोगों पे कितने निर्भर है, क्योंकि अक्सर आपका काम खाली अकेले से तो होता नहीं है, कुछ चीजें आपको इंटरेक्शन से करनी पड़ती है, या कुछ चीजें आपको लोगों की मदद, आपको बुलाना पड़ता है उन्हें, उनको भी कहीं ना कहीं स्केड्यूल करना पड़ता है कि मैं कैसे करूँ ये सब। इन सब टाइम पे अगर अगर आपने बैलेंस आपसे नहीं हुआ, सो आप समझ लो आपसे रूटीन नहीं हुआ, आपने बस हाथ में जो आ गया खा लिया, आज तो एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है मुझसे, मुझसे बहुत थकावट हो रही है, मैं बस काम करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ इन सब दिनों पे, देन सेकेंड थिंग वुड बी कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप आपको कोसते बैठोगे तो आपसे ना अगला दिन भी खराब ही जाने वाला है। तो तो ये जो कोसने वाली काम है ना, आप कोस भी नहीं सकते हो अपने आप को, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं था। यू ट्राइड योर बेस्ट, यू डिड योर बेस्ट, आपने बहुत कोशिश की बैलेंस करने की, बट नहीं हुआ। इट्स ओके, यू नीड टू बी काइंड, बी पेशेंस विद, यू शुड हैव सम पेशेंट विद योरसेल्फ, एंड सिट विद इट, बैठ लो कि ठीक है आज आज नहीं हो रहा, खत्म किया काम, मुझे जो भी उस वक्त पे करना था मैंने कर दिया, और मैं अब मैं बैठने वाली हूँ। आराम से सांस लो, रुको, बिकॉज वेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रुको, असेस योर सेल्फ, हाउ डू यू फील, कैसे लग रहा है आज आपको, ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, सिट विथ यू, टेक टेक 1 आवर, अपने पसंदीदा कुछ काम कर लो, आधा घंटा लो, 1 आवर 15 मिनट सिट, एंड देन यू प्रोसेस, ताकि अगला दिन फिर वो आप कैरी फॉरवर्ड ना करो, Yeah. बिकॉज I देन think that's अगेन good. सॉर्ट ऑफ क्रम्बल, आपका पूरा वीक ही खराब होते जाएगा फिर उससे।
Correct. I really love that, Veena, what you said, कि sit with yourself, अपने साथ बैठो, थोड़ा time, and it's okay to feel sad, uncomfortable. These are Absolutely. feelings, they're absolutely valid. And कुछ देर पहले वीना ने ये भी कहा कि कभी कभी क्या होता है कि बार बार पॉजिटिव होना, डोंट वरी आपको डायबिटीज है, बी पॉजिटिव. मुझे तो बड़ा इरिटेशन होता है जब मैं ऐसे सुनती हूँ कभी कभी, लाइक ओके श्योर आई विल बी पॉजिटिव, बट you can't have that positivity shoved down your throat all the time, right? It's, you're a human being, and you Absolutely. will feel bad on some days, और कुछ दिन खराब होंगे, कुछ अच्छे होंगे. बट एक और थॉट मेरे मन में आया वीना, और वो है कि हम लोगों ने अभी बात की उन लोगों की जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या घर चलाते हैं. Hmm. But also, now it's time for the board exams, and it's Absolutely. exam time for students. So that is a very stressful period somehow. And what do you think they should do to sort of balance? Because a few days back, there was a young girl who was giving her boards, and she Yeah. asked, what should I take with me in the exam hall? Yeah. Snacks, मैं क्या ले जाऊं खाने के लिए? So there are so many things playing on their mind, and what, if I had to give one tip, maybe that would be that it's not the end of the world. It is just an exam. I know it seems like, oh my god, I'm in the 10th standard. अब ये 10th standard मेरे लिए या 12th standard make या break है. ये मेरा पूरा career इस पे depend करेगा. But let me tell you, relax. Yeah. It's not like that. You will have many chances, and it's just one day. It's an important day, sure. So don't be too relaxed, of course, because you want to study and you want to do well, but don't get too stressed about it, and treat it, rely on your experience of all the effort that you've put in over the year. So Absolutely. that would be something that I would say. But I'm over to you, Veena. What advice for students would you have? I usually would depend on parents at such times क्योंकि the kid is much more focused on getting with the exam क्योंकि क्या होता है हम चाहे बच्चे स्कूल जाते हैं बच्चे अपने पियर्स के साथ रहते हैं और उनको वो पियर प्रेशर पता चलता है वो बताएंगे नहीं हमें कि मुझे भी 90% स्कोर करना है क्योंकि उसने स्कोर किया हुआ है वो ये नहीं हमें बताने वाले वो उस प्रेशर में रहेंगे 10th स्टैंडर्ड हो गया 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड ये वो और दूसरी बात स्कूल्स में ये जो हैमरिंग चलती रहती है ना कि ओके आपको हमेशा टॉप में रहना है क्योंकि अगर आप नीचे रहोगे तो आपका कुछ नहीं होगा सो ये सॉर्ट ऑफ हैमरिंग जो चलती है एंड देन कट टू आपके घर पे अगर अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कुछ चीजों का जैसे नहीं अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो शायद मेरे मम्मी पापा को बुरा लगेगा अगर अगर मैं एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरी तो शायद मुझसे ये होगा नहीं प्लस मुझे तो डायबिटीज भी है मैं कैसे करूँ ये वो एट सच टाइम्स मुझे मुझे पेरेंट्स पे रिलाई करना ज्यादा प्रेफरेबल लगता है just during the periods of exams not otherwise of course the kid will develop awareness on its own at its own pace and diabetes तो आपको बहुत पहले ही मैच्योर कर देता है क्योंकि आप इंसुलिन लेने लग जाते हो आप ऑलरेडी कैलकुलेशंस कर रहे हो सो यू आर मैच्योर वे बिफोर योर एज वे बिफोर एंड यू ऑलरेडी हैव felt the burden of diabetes so at a very young age जहां पर आप देख रहे हो कि बच्चे कुछ और कर रहे हैं और हम कुछ और कर रहे हैं so relying on parents would be a better option in a way where parents can of course parents have their own struggle but Yeah, providing a cushion at such times कि ठीक है कोई बात नहीं like you said like you put it very well कि it's okay it's not the end of the day it's not the end of the world you're not going to fail you're not a failure in life it's okay ठीक है कम आए ज्यादा आए नहीं आए इट्स ओके यू कैन नॉट appear because that could also be there yeah. could be there could be a problem where you just cannot appear for the exam you would think कि अरे बस बर्बाद खत्म मेरा साल खत्म नहीं it's not the end of the day because it's just one assessment it's just one assessment I'll tell you what, there are people who have scored, I have scored 60% in 12th. I am doing my PhD. It's not going to change, trust me. It doesn't contribute. What's important is what sort of knowledge you gain, what sort of education you gain. And Yeah. with
handling with diabetes, you know, it's guts. It takes a lot of courage to even show up to something like an exam, because तुम अपने आप को और स्ट्रेस में डालने के लिए तैयार हो, ठीक है मैं कर लूंगा। सो तुम जब शो अप कर रहे हो ना, वही बड़ी बात है तुम्हारे लिए, वही एक कुडोज है और वही एक मेडल है एट दिस पॉइंट। एंड व्हेन यू स्कोर, इफ यू स्कोर वेल, यू स्कोर बैड, वॉट एवर इट इज, यू स्कोर, यू अपीयर, वो एक सॉर्ट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विद पेरेंट्स, just being the cushion, just being the soft support, just being their diabetic brain at such times Yeah. where the kid can go, ठीक है, I, अब मेरे फोरफ्रंट पे तो एग्जाम है, पर पीछे मेरी मम्मी देख लेगी या मेरे पापा देख लेंगे या बहन, जो भी हो, कि ठीक है अगर मुझे चक्कर आए मैं बस आवाज लगा दूंगा, वो है। सो ये दिस सॉर्ट ऑफ relationship, this sort of um, interdependence is much healthier than being very aloof। जो बच्चे Yeah. होते हैं ना, नहीं मैं कर लूंगी खुद से अकेले से। इट्स द पेरेंट्स जॉब टू अश्योर देम कि नहीं, हम है, मत, रोना है रो ले, छोड़ना है छोड़ दे, हम देख लेंगे। That Correct. counts somewhere। Yeah, that support really, and I can see in the comments also, चाहे लोग diabetic हो या caregiver हो, there are in the comments we do see several parents as well. There's a question from Ashlesha that I want to discuss with you now, and she says, how do you deal with the constant diabetic burnouts? And then a follow-up question, how do you deal with mood swings? So do you Sure. want to? Yeah. Yeah, sure. So how do I deal with diabetic burnt outs? Yeah, the fatigue is terrible, that's for sure. Two ways. Yeah. I'll be very clear cut on this. It's one, I give myself 1 day off. I don't look at it. For example, Sundays, मैं भगवान का बच्चा हूँ, फिर जो होगा वो देख लेंगे। बट ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि मैं पेस्ट्री खा रही हूँ, मैं केक खा रही हूँ या फिर मैं पाव भाजी खा रही हूँ। नॉट दैट इट्स बैड, नथिंग ऑन दैट सॉर्ट, बट समथिंग दैट आई डोंट प्रेफर। बट उस दिन पे मैं बैक सीट ले लेती हूँ अपनी ही डायबिटीज में, कि ठीक है नहीं करना, मुझे आज सोना है मैं सोते रहूंगी, मुझे आज नहीं देखना खाने की तरफ, मैं नहीं देखूंगी, अगर मुझे आज मैगी खाने का मन है मैं देख लूंगी, मैगी खा लूंगी, अगर मुझे आज एक्सरसाइज नहीं करना मैं नहीं करूंगी। सो 1 डे, हाँ, आई लेट माई सेल्फ लूज, दैट इज वन थिंग आई डू। सेकेंड थिंग, since for me in my personal life my PhD is very stressful at the moment, तो मैंने अभी एक नया चीज ट्राई करती हूँ मैं अभी, कि दिन का 4 वक्त है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। 4 वक्त पे ना बस मैं 15 मिनट निकालती हूँ दिन में। मॉर्निंग्स तो स्पेशली जिम 1 घंटा, तो वो तो अलग ही हो गया। बाकी के टाइम पे मैं 15 मिनट निकालती हूँ और मैं खाली बैठती हूँ, और वो बीपर बज रहा रहता है कहीं साइड पे, काम कहीं और पे चल रहा है, मैं शट डाउन कर देती हूँ, और आई सॉर्ट ऑफ डिसोसिएट। I Yeah. so it sort of pushes me. Of course, the burnt out is not gone completely, because see, you have a stressful life altogether. It's very difficult to get out of that zone. But if you cannot afford a vacation, this is something that can help at least to push you through the days. Then eventually the burnt out slows down, because वो 15 मिनट आप फिर जब स्टार्टिंग में ऐसा लगता है ना, 15 मिनट में क्या करूं, मैं ऐसी दीवार देखते बैठूं, बट जब आप बैठने लगते हो ना, you sort of feel yourself, you feel your existence, कि ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ। अब जैसे मैं रात को बैठ के उस 15 मिनट में कभी कोई किताब पढ़ लेती हूँ, या फिर मैं नील पेंट लगाती हूँ, या फिर मैं सेल्फ केयर पे जाती हूँ, मैं अपने क्रीम्स लगाऊंगी, या फिर मैं नेल्स फाइल करूंगी, मैं अरेंज ऑर्गेनाइज करूंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड these 15 minutes throughout your day where you do nothing, where you are just focused on yourself, and ये जो हड़बड़ है वो पूरी स्टॉप हो जाए, ऐसे sort That of is thing। such good advice. I am doing nothing actually. जो आफ्टरनून का टाइम हुआ करता था, आई वुड डू एब्सोल्युटली नथिंग, आई वुड जस्ट इट वुड बी मी एंड माय हेड एंड माय इमेजिनेशन, एंड आई थिंक दैट्स सच
it's so important to give yourself that time, right? Also, I want to also add to what Veena said, about burnout and about mood swings. And I also see Manu ka comment aaya hai, and he says tension nahi lene ka simple funda hai. That is true, लेकिन कभी कभी टेंशन तो आ ही जाता है, and हाँ, some of us are a little bit more sensitive, and some of us are a little more thick skinned, and that keeps changing through the course of life, तो वो सारा कुछ भी है. But there is also such a relationship between your physical and mental health. absolutely. आपकी मतलब मानसिक स्थिति और आपका जो फिजिकल स्टेट है, मतलब आपकी शुगर अगर 500 है, तो डेफिनेटली चिड़चिड़ Yes, होगा आपको, या आपकी शुगर अगर 40 है, सो इफ यू आर इन अ हाइपो और अ हाइपर, नेचुरली यू आर गोइंग टू बी cranky, you're going to be irritable, you're going to have those mood swings. So it's also important to realize that the more we keep our sugars in range, I think yeah, it is something that will help our absolutely. mental health as well. And I quickly want to put in one last point before we have other questions and comments coming in, which is, a couple of years ago when I started taking my own diabetes seriously, and I started, experimenting with things, doing low carb, trying to reduce my range, reduce my HbA1c, I noticed one other thing that happened along with all of these nice things that were happening. A1c कम हो रहा था, sugar range में आ हाँ, रहा था, एक्स्ट्रा बॉडी वेट कम हो रहा था, सब हो रहा था, बट एक चीज हुआ जो आई वॉज रियली माइंड ब्लोन, एंड दैट वॉज द मेंटल क्लैरिटी विच केम. यू नो absolutely. सॉर्ट ऑफ ब्रेन फॉग आ जाता है. इट्स लाइक देयर इज अ, आपके मन के ऊपर एक पर्दा है, और हाँ, जब शुगर्स रेंज में होते हैं, लिटरली इट्स लाइक मैजिक, वो पर्दा yeah, उठ जाता है. So the more, I know this is tough, and I know that yeah, managing your diabetes involves taking some amount of small amount of stress, but you have to make a trade off, right? मैं yeah, थोड़ा सा स्ट्रेस और केयर अभी ले लूं, ताकि फ्यूचर में जाके मुझे एक्स वाई जी ना हो, या मैं yeah. खुश रहूं विदाउट माय एडिशनल इश्यूज और कॉम्प्लिकेशंस और व्हाटएवर. Yeah. Like I said, I think, yeah, you put it very well. Ki, like for example, get the hardest part done already. It's you need to take the stress, thoda sa, but just to figure it out. Once you figure it out, it gets easier. It gets easier with time. It gets easier putting it in routine. Or just to add to the mood swings part, I sort of have also found something that helps me is teas. I love tea. So going into this very uh, so I find food plays a very important role. जैसे of course carbs, like you said, अगर 400 है तो वो आप cranky होने ही वाले हो. So this sort of mood swings, no, you can very well control by not control completely, of course, but to a manageable state by changing certain habits. For example, uh, going away from your gadget for hours, keeping your gadgets away, stop with the scrolling part, reducing the caffeine if you can, switching to simple foods, very moderate or low carb, whatever works for you, of course, and trying to do some yoga, meditation. That sort of helps. It sounds very mumbo jumbo, but नहीं, आप जब छोटी छोटी चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे ना, आप आपको फिगर आउट होगा कि आपके बिहेवियर में ही वो चेंजेस आ रहे हैं. जैसे मैंने कैफीन जैसे ही कट डाउन किया, मुझे सॉर्ट ऑफ आई फेल्ट अ वेरी बिग रिलीफ. But yeah, whatever works, you need to find what works for you, of course. Correct, correct. Couple of interesting comments. Harneet says lot of tension if children relax too much. So I think relaxing और tension भी एक मतलब कहीं ना कहीं एक spectrum है, right? ज़्यादा Yeah. relax कर तो भी दिक्कत होती है, और ज़्यादा tension लो तब भी it is obviously very stressful and not very nice for your mind. Rimi says if all your parameters are in range, you do feel happy. That's true. एंड रोहन से चाय पियो खुश रहो. तो रोहन, आप कौन सी चाय पी रहे हो बताना हमें कमेंट्स में. मैं मेडिटेशन भी फोन ऐप पे ही करता हूँ.
That's very smart. And it's such a difficult balance, right? जब वीना ने कहा कि फोन अपना mindlessly scroll मत करो, I was like, ouch. That's I think that's for me. But I think all of us these days, we do that, right? And we it's use, also yeah. complicated because our blood sugar for a lot of us is on our phone. So I might be like, नहीं नहीं मैं तो sugar check कर रही हूँ, but थोड़ा सा चलो Facebook भी देख ही लेती हूँ उसके साथ साथ. Sorry. स्क्रीन टाइम एंड व्हाट आई फाउंड इज, जब हम माइंडलेसली इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपकी पैसिव इंफॉर्मेशन है ना? आपको क्या करना है, मलाइका अरोरा कौन से कपड़े पहन के घूम रही है ये देख के? आपको क्या करना है, हैरी पॉटर का क्या हो रहा है, अब तो जमाना हो चुका उसे, है ना? लुकिंग एट सच माइंडलेस इंफॉर्मेशन, maybe it could be for you, not for others, but what happens is आपके ब्रेन में जो कैपेसिटी होती है ना इंफॉर्मेशन कैप्चर करने की, जहां पे आपको आपके ब्रेन को यूज करना है, वहां पर आप फिर कम पड़ जाते हो, क्योंकि आपके पास वो कैपेसिटी बची ही नहीं रहती है, और आपने वो पैसिवली स्क्रॉल करके या फिर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करके कहीं ना कहीं स्पेंड कर चुके हो। तो फिर ऐसे वक्त पे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उठ के तुरंत आपके मोबाइल को देखते हो, इट सॉर्ट ऑफ takes away the energy that you need throughout the day, and that's a study. Yeah. So I think it's very important to go gadget free a day, and that also helps you reflect inwards, because then you have nothing. आप बाहर क्या देखोगे, पंछी देखोगे, बादल देखोगे, बट कभी ना कभी अंदर भी तो देखना ही पड़ेगा फिर आपको। So करेक्ट yeah. करेक्ट, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू लुक इनवर्ड्स क्योंकि बाहर इतना सारा कुछ है, Yeah. अटेंशन हमारा छीना जा रहा है. Quickly running through the comments, Manu says, as per my experience, everything is temporary in this world, whether it's a problem, life, or anything. Stay hydrated, take deep breath, reduce stress. Very good advice. And Usha says, patience is the key for every problem. बिल्कुल ही सही है. Um, uh, how to balance frequent checking of sugars and become paranoid about it. I think this is really interesting, especially because I think I don't know, when I was diagnosed 28 years ago, CGM तो था ही नहीं. मेरे पास initially glucometer भी नहीं था, and I know we have people on this chat here who even checked with the Benedict solution and only urine test, and क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ करता था पहले, तो उस जमाने से लेकर के अब तक थिंग्स हैव चेंज्ड. अब सीजीएम है, हर 1 मिनट में आपको आपकी शुगर दिख रही है. सो हाउ डू यू नॉट ड्राइव योर सेल्फ मैड but still have good control with all of the access that you have, and Veena, I before you sort of share your take on this, what comes to mind for me is that a lot of people ask me कि just relax, मतलब आप इतने बार क्यों चेक करते हो? सीजीएम लगाने से पहले मैं I mean, there have been different phases in my life. I've not checked also for days together, and then I've checked 10 times also, एक ही दिन में 10 बार 12 बार ग्लूकोमीटर पे. और फिर कुछ लोग कहते हैं कि इतना टेंशन लेने से तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी, चेक ही मत करो. सो सम बैलेंस समवेयर, ठीक है, चेक भी करना है टू मेक श्योर दैट माई फिजिकल बॉडी इज ओके. लेकिन I know I'm not stressed, and maybe for somebody new or for somebody who is going through something stressful. So that's my take on it. I mean, the fact that I have a CGM now, I feel like I feel grateful कि ये technology है. I also feel sad कि this technology is not accessible to Right. everyone. But I think that's a discussion for another time. But वो information मेरे पास है, मैं उसका क्या करूँ, और मैं आगे correction dose लूँ या हम मेरा Hmm. hypo treat करूँ, that power is in my hands. So the way I Right. look at it कि मेरे हाथ में मेरी बॉडी के जो रेन्स हैं, Hmm. मतलब मैं ये गाड़ी चला रही हूँ, ये I'm the owner of this ship. So that's my take, and over to you, Veena. Yeah, I think you put it very well, क्योंकि diabetes often makes you out of control and makes you feel like diabetes is something that is driving your life, and then you feel very low, कि बहुत बुरा लगता है कि somebody, a disease, a disorder is controlling me, और मेरा खुद का कुछ कंट्रोल नहीं रहा. But when you say that CGM sort of gives you this power कि अब इसके रेंज मेरे हाथ में है, मैं इसे कंट्रोल कर रही हूँ, तो I understand the paranoid behavior where it comes from because of the frequent testing. Because जब initially मुझे diagnose किया था, तब मैंने भी वही काम किया हुआ है. मैं भी
वैसी पैरानॉइड हुआ करती थी कि अरे एक एक नंबर की वजह से मुझे बुरा लग रहा है, मैं ये कर सकती थी, वो कर सकती थी. Something that helped is I started charting it down. सो मैं फिक्स टाइम रखती हूँ. तो फिक्स टाइम रखती थी तभी कि 4 बार चेक करेंगे. लंच के बाद, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक और डिनर के बाद हम 4 बार चेक करेंगे और हम चारों बार लिखेंगे क्या हो रहा है. सो द नेक्स्ट डे आई वुड जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दैट. और मैं वो एक स्ट्रिक्ट रूटीन बना दिया था मैंने, और मुझे वो याद भी रहे ना करके, मैंने बजर्स लगा दिए थे, अलार्म्स, ताकि मैं उस अलार्म से जाऊं और करूं. सो इट्स सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग योर सेल्फ. या यू आर स्टिल पैरानॉइड, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पैरानॉइड होना गलत है, पैरानॉइड हो आप, पर जो फ्रीक्वेंट टेस्टिंग की वजह से आप आपके उंगलियों को भी एक दर्द दोगे कहीं ना कहीं, अगर आप ग्लूकोमीटर पे कर रहे हो. सीजीएम इट्स ओके, फाइन, नो वरीज अबाउट दैट. बट अगर आप ग्लूकोमीटर पे कर रहे हो तो आप उंगलियों को भी दर्द दोगे कहीं ना कहीं, पहली बात तो वो. और दूसरी बात, ये नंबर से आप उस वक्त तो कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अक्सर ये खाने के बाद आप देख रहे हो, तो आप उस वक्त तो कुछ नहीं कर सकते. सो यू नो दैट ये अभी आपके कंट्रोल में नहीं है ना. अगर हाँ ये 200 250 है तो आप अगर करेक्शन डोज ले लोगे, फिर उसके बाद चेक करना जायज बनता है. बट आपका आपका लग रहा है कि नहीं 100 है, अब 100 का अगर 90 हो गया तो नहीं. यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ फर्स्ट. ये सॉर्ट ऑफ पुटिंग योर सेल्फ टू, नहीं मैं 4 बार ही चेक करूंगी, मैं लिखूंगी, मैं नोट डाउन करूंगी, या आप वॉइस नोट कर लो, वट एवर वर्क्स फॉर यू. बट सॉर्ट ऑफ पुटिंग दिस सॉर्ट ऑफ जर्नल. और दूसरी बात, other than putting up these alarms and stuff, second is developing this sort of intuition about your body. कि जैसे ही मेरा मुंह सूख रहा है, मुझे पता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, तो तुम जाके तुरंत चेक कर रहे हो. क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने बॉडी को भी, मैं ये नहीं कहूंगी आप 100% ट्रस्ट करो, क्योंकि डायबिटीज वैसे ही उल्लू बनाता ही है अक्सर अपने को. बट एक 30% 40% कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि मशीन भी गड़बड़ करती है. और आज तो बिल्कुल. नुपुर आपका ही एक्सपीरियंस है इसका. हाँ, हाँ. बट आपके इतने साल का एक्सपीरियंस से आपको पता है कि ये गलत है, मैं नहीं हूं आज. और आपने उसी चीजों को खाया है, आपने उसी चीजों को इतने बार दोहराया है कि आपको पता है 2 अंडे खाने के बाद शुगर मेरी 200 तो जाने से रही, तो ये मुझे पता है कि ये मशीन की गलती है. सो ये जो सॉर्ट ऑफ इंट्यूशंस है ना, इससे भी आपका पैरानॉइड थोड़ा कम होगा. पूरी तरह से जाने तो वाला है नहीं, पर थोड़ा जरूर कम होगा. एंड यस, इट्स गोइंग टू एग्जिस्ट. इट्स जस्ट दैट योर वे ऑफ, ये जो आउटलुक है, लुकिंग एट डायबिटीज एंड वेलनेस in this way can sort of help you adjusting to it. करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. और अब आई थिंक हमारा डिसीजन थोड़ा सा, वी ought to give some sort of discussion and have some discussion with regards to the relationships and the personal side of Absolutely. things very quickly as well. So I'm seeing the comments, and I'm coming to them in a minute, but once I read out the comments, Veena, we'll come back to अब पिछले संडे मैरिज और डायबिटीज पे एक वर्कशॉप था जिसपे 3 कपल्स थे और एक मॉडरेटर थी हमारी स्नेहल. और तीनों कपल्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और बहुत से लोगों ने अपने थॉट्स और फ्रस्ट्रेशंस भी शेयर किए कमेंट सेक्शन में. तो चाहे मैरिज हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, हाउ डू वी बैलेंस दैट? व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? मतलब लोग चाहे हमसे कितने भी क्लोज हो या कितने भी दूर हो, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन हमेशा रहता है. तो वो कैसे बनाए रखें और अपनी बाउंड्रीज कैसे ड्रॉ करें? हाँ, सो लास्ट टाइम हमने जब इन पर्सन वर्कशॉप किया था, तब भी इस बारे में बात हुई थी मेरी कि कैसे बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज ड्रॉ करना डिफिकल्ट है. आई वोंट से इम्पॉसिबल, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अक्सर हमें डर लगा रहता है कि अगर मैंने इनकार कर दिया इस शादी में जाने से, या फिर मैंने इनकार कर दिया आज मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाने से, क्योंकि मुझे बड़ा थकावट सा लग रहा है, या फिर मैंने इनकार कर दिया, मम्मी ने मुझे आज गुलाब जामुन बनाया था तो वो कह रही थी थोड़ा सा खाकर देख ले. तो ये सब चीजें है ना, इन सब चीजों के बाद ना बहुत
इनको ना बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पहली बात तो ये। और ये सॉर्ट ऑफ अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है, खाली खाने के लिए नहीं, बहुत सारी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है कि आपको कभी ना कभी कहीं जाना पड़ता है, किसी किसी लेट्स से डेस्टिनेशन वेडिंग, बट यू आर नॉट अप फॉर इट बिकॉज आपके कई महीनों से आपको बहुत ही डिफिकल्ट डायबिटीज रहा है, एंड यू लाइक नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं ये वेकेशन अपने लिए लूँ। सो इन सब टाइम्स पे ना, putting a boundary, and what are you first, for more than boundary, what are you even expecting in a relationship like that? मतलब आप क्या चाहते हो कि आप ये चाहते हो कि आप हमेशा हंसी खुशी रहे और कभी झगड़े ना हो? बिकॉज इफ यू आर स्केर्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, then it's going to be difficult moving past it. अगर आप डर रहे हो कि अगर मैं ना बोलूंगा तो झगड़े हो जाएंगे, तो फिर मुझसे कोई बात नहीं करेगा, बट in a way you are then also being betraying your diabetes and your routine sort of thing. So balancing in such relationships would comes from very strict strict boundaries first, and second would be, like I said, where do you want to take this relationship, and also it also depends on the other person, क्योंकि अगर सामने वाला आपके डायबिटीज को समझता है तो वो जरूर समझ के लेगा कि आप ये क्यों कर रहे हो। लोग बिल्कुल। लोग लोग क्या एक ही आपके नाक से तोड़ने वाले हैं नहीं, रिश्ते तो अगर इतनी जल्दी रिश्ते टूटते तो वो रिश्ते पहली बात बनते ही नहीं, सबसे पहली बात। और अगर ये आपके करीबी लोग हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर दैट if at all you do say no, they will understand, and if they do not, there is another way that you can make up for it. आप इनिशिएटिव लो कि ठीक है, उस दिन मुझसे उस दिन नहीं हुआ, पर आज मैं चाहती हूँ कि हम एक स्केड्यूल करते हैं और हम इस दिन पे मिलते हैं, हम यहाँ जाएंगे, हम तुम्हें जो चाहिए वो करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम अपने अपने डायबिटीज को फोरफ्रंट पे रखा है। आज आज मैं चाहती हूँ कि ये टाइम मैं तुम्हारे साथ बिताऊं और तुम जो चाहो हम वो करेंगे। और Right. और ये बात तो है नहीं ना कि सामने वाले को आपका डायबिटीज खराब करना है। दैट्स नॉट एन एम इन द अदर पर्सन्स लाइफ, राइट? ऑल दे वांट Yes. इज यू, योर कंपनी एंड योर प्रेजेंस, एंड व्हाट विल गिव यू योर प्रेजेंस इज द सैनिटी, कि ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं प्रेजेंट रह सकती हूँ, मैं एग्जिस्ट कर सकती हूँ। सो ऐसे टाइम पे इफ यू पुट अ बाउंड्री देयर एंड से नहीं, मैं आज ये नहीं कर सकती हूँ, यू कैन ऑलवेज सजेस्ट कि ठीक है, मुझसे आज तो नहीं हुआ, हम बाद में करें क्या, हम शायद उस वीकेंड पे कर सकते हैं, कुछ ना कुछ मैं प्लान करती हूँ, यू नो। Yeah. सो इट्स द कंपनी एंड इट्स ऑल्सो द अदर पर्सन दैट मैटर्स इन दिस केस। Absolutely, so much, and such interesting comments, guys. Please keep them coming. बहुत ही फटाफट हम लोग comments में भी go through करते हैं. When somebody insists that I have a sweet and I take it on a plate, I touch it and I return it. इस पर मुझे कुछ शेयर करना है. कुछ ही दिन पहले मेरा भी कुछ similar experience रहा. मैं 1 मिनट में शेयर करती हूँ. Then another comment: rice good है या bad? Please explain. वेल, ग्रुप में ये डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बेसिकली ये आपके ऊपर है। अगर आप खाना चाहो तो आप खा सकते हो बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो लो कार्ब करते हैं और वो नहीं खाते हैं राइस, यहाँ बहुत स्पाइक कर जाता है शुगर, तो नहीं खाते हैं चूज करके, तो वो भी वैलिड चॉइस है। इट्स कम्प्लीटली मतलब आपका वो डिसीजन है कि आपको खाना है या नहीं खाना है। मुझे लगता है कि मैं ना खाऊं वो ही मेरे लिए आसान है, क्योंकि शुगर्स और मेरे रेंज में रहती है, तो मैं अब नहीं खाती हूँ, लेकिन बहुत साल पहले मैं खाती भी थी। मेरे को भी ऐसे ही बोलते हैं कि बार बार चेक मत करो। अभी मेरी शुगर 42 थी, मैंने चेक की तो ओके। आई होप आपने ग्लूकोज या शक्कर या चीनी खा ली है थोड़ी सी, और अभी आप थोड़ा बेटर फील कर रहे हो। तो मुझे क्विकली एक स्टोरी शेयर करनी थी। जब वीना बाउंड्रीज के बारे में बात कर रही थी, मुझे याद आया अभी कुछ दिन पहले सविता, श्रेया और मैं, हम लोग ब्लू सर्कल की तरफ से एक रूरल एरिया में गए थे, गांव में गए थे, खेड़ तालुका में, महाराष्ट्र में। और हम लोग ने वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल में और एक प्राइवेट स्कूल में हम लोगों ने डायबिटीज़ के ऊपर चर्चा किया, और डायबिटीज़ के ऊपर एक प्रोग्राम रखा जिसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल के स्टाफ सबको बताया डायबिटीज़ क्या होता है, उनकी शुगर चेक की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। और जब हम निकल रहे थे वापस घर के लिए, गाड़ी में थे, तब कोई जान पहचान के लोग थे जिनसे मिलना था। वो उसी गांव में रहते हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त थे वो किसी के। तो हम उनके घर गए, और जब
ऑन द वे थे तो सविता ने कहा अब आप उनसे पहली बार मिलोगे तो आपको वो ज़रूर चाय पिलाएँगे, बहुत अच्छे हैं और मतलब हो सकता है कि उनको बुरा लगे तो आप मतलब सोचो आपको क्या करना है। तो ये एक सिचुएशन कई बार आ जाता है कि कुछ लोग चाय ऑफ़र करते हैं या कुछ मिठाई दे देते हैं और उस गाँव में या मतलब वो स्पेसिफ़िक फ़ैमिली की मतलब ये था कि चाय बिल्कुल मतलब चाशनी जैसी। तो उसमें ढेर सारा दूध होगा, बहुत शक्कर होगा और इट वुड बी वेरी, वेरी स्वीट एंड मुझे ना तो दूध पसंद है, ना तो चीनी ऑब्वियसली मतलब मैं अब तो नहीं चीनी खाती हूँ, तो आई वाज़ थिंकिंग व्हाट कैन आई डू? And then, in that situation, the way I drew my boundary was I said, आते ही जब उन्होंने कहा कि आपको हम लोग चाय पिलाएँगे, आप यू नो तो मैंने कहा मैंने रिक्वेस्ट किया और मैंने कहा कि मेरे लिए आप ब्लैक चाय चीनी के बिना और दूध के बिना अगर बना सकते हो तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू और फिर मुझे वो ब्लैक चाय मिली विच दे काइंडली प्रिपेयर्ड फॉर मी एंड फॉर एन अदर फ्रेंड और उसमें मेरी शुगर लेवल्स भी ठीक रहे मेरा जो मेंटल स्टेट है वो भी ठीक रहा क्योंकि मैंने मेरी बाउंड्री ड्रॉ की और वो भी खुश हुए जिनके घर हम गए हाँ, थे कि चलो हाँ इन्होंने हमारे घर से कुछ तो खाया पिया हाँ, तो I think it was net a pretty good experience for me that way rather than saying नहीं मुझे चाय नहीं चाहिए फिर वो और कुछ लाते चकली लाते समोसे लाते तो एब्सोल्युटली। हाँ या सजेस्टिंग एन अल्टरनेटिव, क्योंकि इट्स नॉट कि तुमने मीठा खाना है और वो तुमको मीठा खिलाना चाहते, इट्स द थॉट दैट काउंट्स कि या मेरे घर पे कोई गेस्ट आए है और मैं चाहता हूँ कि वो उनकी मेहमान नवाजी हो। इट्स ऑलवेज द थॉट एंड द इंटेंट, इट्स नॉट लाइक लोग आपको जानबूझ के हार्म करना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि मैंने मिठाई लेके थाली में खाली रख दी और फिर मे बी आपने वो किया। perhaps if there was any other option you could have maybe आप अगर alternate suggest कर सकते हो तो it's just that you eat something, that's the thought. आई थिंक और इंडियंस को मतलब बहुत ही मेहमान नवाजी का तो हाँ, बहुत हाँ, शौक है राइट वी फील लाइक हमारे घर में कोई आया तो बस इसको खिला के ही रहेंगे हम तो absolutely. आई थिंक एज अ होस्ट इवन वी चेंज राइट बिकॉज आई डोंट लाइक टू बी फोर्स्ड मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता था पहले लेकिन अभी धीरे धीरे मैंने बोलना शुरू किया है कि हाँ, नहीं ठीक है मुझे पानी दे दो मैं पानी हाँ, पी लूंगी या मतलब नींबू पानी दे दो नमक वाला बट इट गेट्स वेरी चैलेंजिंग तो अगर मेरे घर कोई आए तो अब मैंने भी ये सीखा है तो मैं भी उनको फोर्स नहीं करूंगी आई थिंक दैट मेक्स अस ऑल्सो एज डायबिटिक्स a little more considerate of people that might have problems हो सकता है किसी को सीलियक है डायबिटीज है और कोई प्रॉब्लम है तो that is something I see Nishtha's comment here she says I've started doing what Veena spoke about I make plans with my friends when I know I'll be all right that way I always get brownie points from my friends कि ये सामने से प्लान बनाती है that is very smart yeah, yeah, because I believe people are not inherently bad. It's for relationships to work, it's a two-way street. You need to know that diabetes is not your life. You have a life beyond that, and you want people to be in that life with you. तो उन्हें डायबिटीज का जितना उनसे हुआ उतना उन्होंने समझा, बड़ी बात है। थैंक यू फॉर अकोमोडेटिंग, बट you also have to then accommodate them into your life in your own way, ताकि तुम भी खुश रहो वो भी खुश Correct. And रहे। as we are sort of approaching the end of our workshop, हम लोग बातों बातों में कभी-कभी टाइम से मेरा भी ध्यान निकल जाता है. But one thing, if I take away like, and I would request कि whoever's watching also please share in the comments what is the top tip or the top thing that you take away from today's workshop. You can share it in the comments. आप comments में हमें बताएं कि ये workshop से आपको एक अगर top चीज लगी कि हाँ ये चीज तो मतलब एकदम नंबर वन पे है मैं कल से करूंगी या कल से करूंगा या आज से तो वो हमें कमेंट्स सेक्शन में बताएं बट फॉर मी एंड देन वी लास्ट वीना आल्सो आई थिंक दैट वन थिंग इज दैट द कंट्रोल और द ओनरशिप ऑफ माय डायबिटीज इज माइन ये Yeah. मेरी गाड़ी है और मैं इसे चलाऊंगी कोई दूसरा नहीं चलाएगा कोई डॉक्टर नहीं कोई भगवान नहीं कोई दूसरा फ्रेंड फैमिली कोई नहीं ये द बक स्टॉप्स एट मी Yeah. मुझे कंट्रोल चाहिए तो मुझे एफर्ट लेकर के मुझे ही ट्राई करना पड़ेगा कि मैं अपनी डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करूं और मैं अपने ब्रेन में थोड़ा सा बैंडविथ हमेशा खाली रखूं कि मैं सोच पाऊं right because we it is an additional burden so that's something that really stood out for me and maybe Veena can also share hers Yeah, yeah, absolutely. For me, when you said the same thing, क्योंकि
ऑफन मुझे जब इनिशियली डायग्नोसिस था, मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी थी. आई टुक थेरेपी जस्ट सो दैट आई कुड फिगर आउट whether I have depression because of diabetes or is it something that I am putting myself through now. But the moment I realized that yes, therapy does help, but also taking the reins of diabetes on my hand, in my hand. तो मैं जाके रिसर्च करने लग गई. मैंने आपको कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे हो रहा है नुपुर, क्या करूं मैं, अब मैं फंस चुकी हूँ. एंड देन व्हेन यू स्टार्टेड स्पीकिंग टू मी कि नहीं, इट्स ओके, नॉर्मल हो जाएगा, हम कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, विल फिगर इट आउट. And then when you gave me all those resources and I started browsing, putting up the efforts in the initial years, and right now when I'm very much comfortable with myself and with my body and stuff, I think it's the control. I absolutely agree with you कि जब वो reins तुम्हारे हाथ में होती है and then you're like, I am going to see where this is going tomorrow. That's the best power that you have over diabetes or over anything that you want to achieve. Yeah. Correct, correct. That is, it's been such an amazing discussion, and I'm going to quickly read out a few comments. Yeah, Managing diabetes is a mind game, and clarity absolutely. with discretion is required. I think all of these are such golden words. Same for me. I feel like we need reminders time to time कि we are in charge and not diabetes. It's a part of us, and it's not everything. रोहन सिंह, ये मेरी गाड़ी है, इसके 4 पहिए हैं. One is monitoring diet, medication, and exercise. And Yeah. being comfortable with your diabetes is so important. So I think amazing thoughts shared by our friends also in the comments, and we are just at the hour. So we're all gonna take our Sundays further to relax and chill Yay. and have a good time. So yeah, Veena, any sort of last thoughts or I think it was really kind of you to invite me again. I want to be connected, and I think this is an amazing platform to talk about different aspects of diabetes. I don't know any other community-led foundation as such because let me tell you, doctors don't help. They don't tell you, and it's very difficult to maneuver on your own. So finding this support group, this sort of people and community is a blessing. So make sure that you use, check the website. I have been recommending it to a lot of people as well, ki read, understand how things work. So yeah, that's it. I'm very thankful to you and really very grateful. no, and I am to you because, and for those who joined us late, Veena is a neuropsychologist. Sounds like a really cool thing. At the beginning of the workshop, she explained what a neuropsychologist is and what they do. So, if you've missed that, you can sort of go back and watch that again. So, thank you, Veena. And you're not even in the same time zone, but you're juggling 1,000 things and you made the time for this. Really, really happy to have you. And quick reminder to follow us on all social media platforms. We're on Facebook, we're on Instagram, we're on LinkedIn, Twitter, YouTube. we're everywhere. और हर संडे 5 बजे हम लोग ऑनलाइन वर्कशॉप्स के लिए मिलते हैं. अभी हमने ऑफलाइन वर्कशॉप्स भी शुरू किए हैं. Veena was in India a few weeks ago, and that time we did one in Pune, we did one in Mumbai. Nishtha, I can see in the comments section, and we did one just yesterday actually in Bangalore. So if you want us to do more in-person workshops, tell us on the group where you'd like to, which cities you're based in, and where you want us to come and do it. And have a happy Sunday. See you next Sunday, 5 p.m. Bye. Bye. Bye.